young lawyers and law students ज़्यादातर में एक हैबिट होते हैं कि समरी जजमेंट पढ़ने का। और बहुत सारे न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जो इस तरह के समरी जजमेंट प्रोवाइड करते हैं। बहुत रिफाइंड कट्स एंड शॉर्ट्स कुछ टिट्स बिट्स न्यूज़ आर्टिकल्स में लिखते हैं। नाउ व्हाई इज़ इट अ वेरी डेंजरस प्रपोजिशन फॉर लॉ स्टूडेंट्स? एक आम आदमी ये पढ़ता है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट व्हेन यू आर अ लॉयर or an advocate or a law student, you should always read the full judgment, read the entire story. Now, let's look at this one. This is an article by Live Laws that says, and this is the headline, it says, Section 482 CRPC not open for High Court to rely on investigation report in plea to quash FIR. Supreme Court का ये judgment है. Now, इसका मतलब पहले आप समझ लीजिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई भी आपके पास मतलब हाई कोर्ट में जब कोई प्ली आती है 482 के अंदर, अगर उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, कोई एफआईआर है, उसको क्वाश करने के लिए, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे उतने रिलाई मत करे। ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है। नाउ ये आपका मेन जजमेंट है अशोक कुमार जैन, जो कि यहाँ पर भी मेंशन है। ये केस टाइटल अशोक कुमार जैन वर्सेस। नाउ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन कहाँ पे है उस कंप्लीट जजमेंट का? तो जैसे कि इन्होंने कहा कि प्लेसिंग रिलायंस ऑन प्रतिभा देवी की इस जो केस में यहाँ पे लिखा है, इट इज नॉट ओपन टू कोर्ट टू रिलाई ऑन रिपोर्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नाउ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो ऑब्जर्वेशन है, दिस ऑब्जर्वेशन was made in a different case. The Supreme Court merely cited this one. Now you can go to this case. This is the case where that observation was made कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे उतना रिलाई नहीं कर सकते एफआईआर क्वाश के प्ली में. That is the first thing. Now, because one other thing, if you read this judgment, ये अशोक कुमार जैन जी का जो जजमेंट है, ये इस पूरे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है, ये जो पोर्शन है, नॉट ओपन फॉर हाई कोर्ट टू रिलाई ऑन, दिस वाज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, and or rather this case was cited to help the case, to help Supreme Court quash the FIR that was filed against this appellant. जो ये अशोक कुमार जैन जी का जो केस है, एकदम लास्ट में आप अगर देखेंगे, सेट असाइड FIR नंबर सच एंड सच इज क्वाश्ड, तो उन्होंने जस्ट उनके केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बिकॉज दिस इज द वेरी बेसिक नॉर्म एक्चुअली, whenever Supreme Court decides on a certain direction, to establish कि वो जो direction है वो सही है, the court uses various judgments. Now coming to the second part, why these are not the same things. If you go to this Pratibha versus this case, here you will see this is a case of 498. तो इस केस में ये जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपके पास कोई मतलब क्वाशिंग एफआईआर क्वाशिंग के लिए कोई एप्लीकेशन आता है, तो आप पुलिस रिपोर्ट में जस्ट बिकॉज बहुत कुछ लिखा हुआ है आप उस पर कंप्लीटली मत जाओ, आप प्राइमा फेसी केस देखो एंड अकॉर्डिंगली, मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, देन अकॉर्डिंगली यू डिसाइड. दैट इज द overall sentiment of the Supreme Court in this case. Now, this case, ये जो अमित कुमार जैन या फिर जो भी है, ये जो केस है, ये कमर्शियल डिस्प्यूट का केस है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरसी नेगोशिएशन, ओशवाल ओवरसीज, ये कमर्शियल एंटिटी है और ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये 406 एंड 420 ऑफ आईपीसी, जो चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का what would you say केस है. So they are not on the same footing, they are very different, and above all
This observation was made in a different case, in a different context, and the court is merely citing it. और आपको पता होगा कि 498 का जो अभी का जो जजमेंट्स है, दे आर वेरी डिफरेंट देन जजमेंट दैट यूज्ड टू बी पास्ड बैक इन 2007 उस समय. नाउ देयर मतलब 49 आपको पता होगा बहुत सारे जजमेंट लेटेस्ट है जिसमें अरेस्ट भी अलाउड नहीं है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन है 498 के केसेस में. सो इफ यू जस्ट रीड दिस सेक्शन कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट यू नो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता एफआईआर क्वाश के रिपोर्टिंग में, और आपने ये साइट कर दिया, तो मतलब अदर साइड में जो होगा, he will basically make you will make rather fool out of yourself, because he will come and say, your honor, this case and that case, they are not on the same footing, they are different. Every case, there are three main crucial aspects: the context, the ground and the objective. आप कभी भी कोई केस अपने केस में अगर आप साइट करते हैं, अगर आप लगता है कि ओके द केस दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दिस जजमेंट विल हेल्प यू, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेक whether it is in the same context or not. So अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, आप कोई कमर्शियल केस का जजमेंट डाल दोगे, अगेन यू विल बिकम अ लाफिंग स्टॉक. और इफ इट इज अ वाइस वर्सा, कमर्शियल का केस है, आप जाके कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस वहां पे डाल दिए, it will not be on the same footing. Then what was the grounds? And those grounds you only understand by reading the full judgment. Why did it do it? There were several, because when a case is decided by the Supreme Court, though it does not look into the factual, sorry, the evidence and all, but it does look into the factual aspects. And there is a balancing factor 50-50. The court will only intervene if you have more than 50% support with your contention with respect to the factual grounds, not the evidence but the facts, things that happened. And uh, last but not the least, that is the ground. So you always need to read the full judgment. Do not just read this kind of, I mean, they are very good source of information when you are just doing some quick reading, and people who know how to handle case laws. But if you're just a lawyer, law student, or young advocates, do not make this mistake. Take some time. Always read the full judgment. Otherwise, as I said, you'll just display your intellectual stupidity. Why is it intellectual? Because you know how to cite a case, you have done it, which is a good. But stupidity is because you didn't read the full judgment, you did not read the context, you did not know the grounds that help court to come to that decision. And the grounds are again attached to the context. And the last, it has to uh, commensurate with the end objective, because every statute, every law has a end objective to serve the end of justice, or some could be something else. So that also has to be looked at. So always read the full judgment. Do not read judgment tidbits or news bits. It's a bad proposition. Thank you.